वेलकम टू माय चैनल। आज +3 सेकेंड फेज एडमिशन पाई नोटिफिकेशन आसी। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आज नोटिफिकेशन जारी करछि +3 बा यूजी कोर्सेस रो फेज 2 ई एडमिशन पाई। सो द टाइमलाइन फॉर फेज 2 ई एडमिशन इनटू यूजी कोर्सेस अंडर SAMS in the higher education institutions for the academic session 2024 and 25. तो देखिबा the availability of online common application form on the website is 12th August 2024, that is Monday 4 p.m. onwards, and last date for applying online CAF or common application form through website is 26th August 2024 Monday up to 11:45 p.m. तो पिला माने आमर सेकेंड फेज रो ई एडमिशन प्रोसेस 12 अगस्त रु आरंभ होई जिवो। 12 अगस्त रु ही फॉर्म पकेबा कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म पकेबा आरंभ होबो एवं 26 अगस्त राति 11:45 पर्यंत आमे फॉर्म पके पारिबा सेकेंड फेज ई एडमिशन पई। एवं एडिटिंग ऑफ कैप फॉर द कैप सबमिटेड अर्लियर जो माने 12 रु 26 भितरे फॉर्म अप्लाई करिथिबे कैप से माने जदि किछि एडिट करिया चाहिबे 27 अगस्त दिन एडिट करि पारिबे। Publication of provisional allotment of seats for first selection along with the list of waitlisted applicants. जो माने सेकेंड फेज रे फॉर्म पकेइथिबे सेमानकर लिस्ट बाहरिबो सेप्टेम्बर 2 2 सेप्टेम्बर 2024 मंडे। रिपोर्टिंग ऑफ सिलेक्टेड एप्लिकेंट्स एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी जो एप्लिकेंट माने सेकेंड फेज रे सिलेक्ट हेतिबे सन रिपोर्ट करिवे एवं एडमिशन फी पेमेंट करिवे 3 सेप्टेम्बर रु 6 सेप्टेम्बर मध्य रे। तो एबे आसंतु जिबा आमे जानिबा कि केउ माने सेकेंड फेज रे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म अप्लाई करि पारिबे जानिबा। यदि देखिबा गवर्नमेंट रो नोटिफिकेशन अनुसार तो व्हाट इज द गाइडलाइन एंड टाइमलाइन फॉर एडमिशन इनटू फेज 2 +3 by UG courses under SAMS for the academic session 2024-25. So the following categories of applicants are eligible to apply. एई कैटेगरी रो आवेदनकारी माने एलिजिबल योग्य सेकेंड फेज रे अप्लाई करिया पाई। प्रथम applicants who have not applied during the phase 1 admission process due to various reasons. जो माने फेज 1 एडमिशन प्रोसेस रे कोनोसी कारण रु अप्लाई करि पारि नाहांती माने टोटली आदौ अप्लाई ही करि पार नाहांती से माने पकई परिबे सेकेंड फेज रे। कैटेगरी 2 applicants who were previously applied in phase 1 admission process but not selected due to various reasons. आउ केउ कैटेगरी पिला पकई परिबे जे माने फेज 1 रे अप्लाई करिथिले किंतु कोनोसी कारणरू तांकर सिलेक्शन होई नै से माने सेही कट ऑफ कैटेगरी आसी नाथि तांकर सिलेक्शन ही होई नै। जो चारिटा फेज 1 रे चारिटा राउंड रे हेतिला एडमिशन तांकर कोनोसी राउंड रे भी सिलेक्शन ही हेई नै से माने अप्लाई करि परिबे। एंड कैटेगरी 3 applicants who were previously selected but not taken admission in phase 1 admission process due to various reasons. आउ के माने पकेबे जेउ माने फेज 1 रे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म पकेइथिले भरिथिले किंतु सिलेक्शन भी हेइथिला तांकर एडमिशन पई किंतु कोनोसी कारणरू एडमिशन करि पारि नाथि तले पिला माने यथा शीघ्र एई तीन कैटेगरी पिला माने 12 अगस्त रु 26 अगस्त भितरे फेज 2 पई +3 पई एडमिशन पई फॉर्म अप्लाई करि पारिबे। आउ थरे कहि रखुची तीनोटी कैटेगरी जो माने फेज 1 एडमिशन प्रोसेस रे भाग नै पारि नाहांती ता माने से माने आदौ कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म अप्लाई करि नाहांती। आउ को माने पकेबे जे माने फेज 1 एडमिशन प्रोसेस रे भाग नै छंती किंतु कोनोसी कारणनु ताका सिलेक्शन होई नै एवं जो माने थर्ड कैटेगरी जो माने फेज 1 एडमिशन रे भाग नै छंती ताका सिलेक्शन भी होईची किंतु से माने एडमिशन करि नाहांती एई पिला माने पकई परिबे फेज 2 एडमिशन प्रोसेस भाग नै परिबे। The applicants who have already been submitted in any honor subject at any of the higher education institutions during the phase 1 admission process are not eligible to participate in the phase 2 admission process. जो माने phase 1 admission process रे भाग नै छंती एवं ऑलरेडी कोनोसी कॉलेज रे ऑनर सब्जेक्ट पाई एडमिशन होई जाई छंती से माने एलिजिबल नहती योग्य नहती फेज 2 एडमिशन प्रोसेस रे। Applicants who have already paid their common application form fees during the phase 1 admission process need not to pay the common application form fees again while applying for the phase 2 admission process. ताले सिकुची जो माने
এই পয়েন্টটি ହେଉଛି କାଟାଗୋରୀ 2 ଆଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ 3 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ଫେଜ୍ 1 ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଜ୍ ବା 200 ଟଙ୍କା ବା ଯାହା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ ଦ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ୱିଥ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମିତି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ fill up a fresh application form select करिवे a fresh application common application form कले सेमान को अप्लाई बेले जो फीस दवा पड़े 200 टका बा जहाँ दवा पड़े सेटा देबे नाही applicants who have not applied during the phase 1 admission process will have to create their individual username and password in SAMS portal and fill up the CAF with the relevant information these fresh applicants will have to pay the CAF fees তাহলে ଯେଉଁମାନେ ଫେଜ୍ 1ରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରି ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଆଦୌ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଯେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବଂ ସେମାନେ କାପ୍ ଫି ଦେବେ ଯାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେବେ all the applicants participating in the phase 2 admission process have to pay the admission fees fresh ଯେତେ ସବୁ ତିନି କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫେଜ୍ 2ରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବେ if she or he had paid the admission fees earlier in phase 1 admission process but did not take admission the amount will be refunded to the account number they have provided in the cap within due course ताल जो माने phase 1 admission process रे भाग नै छंती किंतु admission करि पारनांती बा सिलेक्शन होई नांती सेमान जदि phase 2 रे भाग नउ छंती सेमाने तांकर जो पुराना जो पैसा देइथिबे पुराना कॉलेज रे तांकर अकाउंट जो अकाउंट रो पैसा कटिथिबो से अकाउंट को रिफंड होई जबो there will be no SAMS resource center validation for the phase 2 admission process prior to admission the applicants are advised not to visit any SAMS resource center for validation or correction of their cap until admission ताले से कुछ admission दिन ही जीवा admission पूर्वरु जीवा दरकार नहीं क्यों जगह को तमर correction पाई validation पाई admission तुम जो दिन आसीबो से दिन जीवो the selection of the applicants will be done purely on a merit basis pure merit basis रे mark basis रे cut off mark अनुसार पिलान को सिलेक्ट करना करा जीवो there will be no reservation and weightage for this phase 2 admission process तो clearly से मेंशन कर देची phase 2 admission process रे no reservation SC ST reservation देखा जीवो नहीं simply merit basis रे mark basis सेटा देखा जीवो नहीं weightage by reservation there will be no freeze slide and float very important phase 2 रे freeze slide float किछ ऑप्शन नहीं no not available for the phase 2 admission process after publication of first round selection the selected applicants can download the intimation letter from their login and have to pay total admission fees directly at their selected institution in any mode preferably that is net banking bank challan NEFT or UPI सिकोची जोंटी पिलार सिलेक्शन हबो फ्रीज स्लाइड की फ्लोट ऑप्शन नाही पिला जोंटी तार सिलेक्शन हबो जो कॉलेज रे सेही कॉलेज पई से पैसा भरी से कॉलेज को जीव जो द्वारा एडमिशन आस एवं द्वारा इंटीमेशन डाउनलोड करिवो इन एडिशन टू द मेरिट लिस्ट एटा जो मेरिट लिस्ट जोना बाहरिवो मेरिट लिस्ट सहित आ वेटिंग लिस्ट कॉलेज काढिवो इन एडिशन टू द मेरिट लिस्ट ए वेटिंग लिस्ट shall be provided in the higher education institution space as well as in the SAMS degree website. In case of the applicants selected in the first round selection do not turn up for admission within the stipulated time, universities or colleges can publish the selection or waiting list on a merit basis and complete their admission process as per the scheduled timeline. ताले जो मानकर phase 2 रो first round selection हबो सेमन जदि admission टाइम भितर न करंती तो गोटे वेटिंग लिस्ट रु पिला को रखा जिवो कॉलेज जो कॉलेज थे जे दायित्व से फोन कर पिला इनफॉर्म करेंगे एवं वेबसाइट से ना कॉलेज वेबसाइट रे बा हायर एजुकेशन वेबसाइट रे बा साम्स वेबसाइट रे रिफ्लेक्ट करा जिवो तो पिला माने सब प्राय सब दिन साम्स वेबसाइट चेक करथिबे कमन जेबेटू एडमिशन आरंभ होई जिवो सेबेटू प्रत्येक दिन साम्स वेबसाइट चेक करथिबे वेटिंग लिस्ट ता ना थाई पारे After the publication of first round selection, the upper choice institution of an applicant along with not selected applicants will be considered for the waiting list round. ताले किछि पिला को waiting list round रे रखा जिवो जदि कन्फर्म पिला माने न आसंती waiting list रो पिला को रखा जिवो जणिया जिवो सेमान एडमिशन करि पारिबे ताले ये थिला डिटेल प्रोसीजर ऑफ फेज 2 एडमिशन यूजी कोर्सेस फॉर +3 पिला माने जो माने इंटरेस्टेड अच्छो जो माने एलिजिबल अच्छो योग्य अच्छो से माने फेज 2 एडमिशन प्रोसेस रे भाग नै पारिबो
आशा करुच्ची ये भिडटी तुम मान बहुत साहाय्यकारी और उपयोगी हम। थैंक यू।